I have shared my screen. Okay. Yes. Okay. That's good. Okay. So I was speaking about the lab fix for AD Connect lab. So some users have started their lab for AD Connect and some people are yet to start. So you utilize the weekend, install the lab and come with your lab. And if it's successful, then it's okay. And if you have errors, then in the upcoming sessions, we are probably going to have a lab fix session for the all the labs. Okay, so far. Then we spoke about types of synchronization in AD Connect. Then we spoke about the password synchronizations in AD Connect. Then I taught you what is migrations. Okay. And today's agenda is we have this 5 agendas for today. So hopefully I won't be able to cover everything, but I will try to cover at least these 3 things. Okay. So MFA or 2FA. So it is the multi-factor authentication or two-factor authentication. So it is nothing but like incentive means the second level of authorization after the passwords. Okay, so like you get OTP for any given services after inserting the password, we can enable the similar authorization protocol or similar authorization authorization fashion for our M365 users. So we can enforce and make mandatory that after inserting the password, they should also able to authorize via their mobile devices. So that is multi-factor authentications. So let me show you how to do that. Let me pull my device over here. So for mutual factor authentication or multi-factor authentication, we can use 3 options. Okay, so this is one of the interview questions. What are the options available in MFA? So you can configure MFA to text your phone or give a call to your phone. Okay, you will get a OTP or else you will receive a call. So once you receive a call, you are automatically authorized. Okay, or you might get a OTP via call. Second level of authorization that is used in MFA is the authenticator app. So you have to, I will show you the authenticator app, how it looks. So it is basically a Google Authenticator or a Microsoft Authenticator apps, okay, in which you will receive randomly generated OTPs that refreshes every 30 seconds. Okay, or you will get the approval on your mobile device. You have to just click on approve and you are good to go. Okay, so this is second level of authentication where you that authenticator generates random OTPs for you every 30 seconds. And whenever you log in, you have to insert that OTP, which the authenticator is generating. Okay. The third type of authentication is hardware device. Okay. So like authenticator, which is uh, a piece of software that can be installed on your phone. You have an authenticator device solely for the purpose of authorization. So that device looks like your USB device, a small device in which there will be a small screen like the thermometer screen, and a temporary token will be generated for 30 seconds.
and random tokens will be generated like OTP, 6-digit OTP or 4-digit OTPs keeps on generating every 30 seconds. So that device is dedicatedly for generating that authorization OTP or authorization code. Okay, so that is the device like Rubik Cube. Okay, so this is hardly used nowadays, but still some companies are using. So most of the users are using the SMS OTP or the authenticator OTP. Okay, so SMS OTP, everyone knows how the SMS OTP looks. An authenticator app, if I want to show the authenticator app, okay, so this is how authenticator apps looks. Let me Okay, so this is how the authenticator apps look. Okay, it is the mobile device application, and you can see this is generating password. Okay, so you can have various authenticator for your various account. So you can see this user is using your Gmail account for generating the OTP password. So what will happen is this authenticator apps every 30 seconds, like the 30-second cycle, generates the random passwords or the random OTPs or random codes. Okay, so you can use that for your Instagram as well. So when there is an option in Instagram to use a dual factor authentication, okay, you can use it for Google. So similarly, you can use that for Microsoft 365 Admin Center. Okay, so download this app. You want to click on this plus icon, and then there will be a code displayed on your computer. You have to scan that code and get this authenticator connected with your M365 users. Okay, so it is nothing but a random password generator. That is the second type of authentication. First one is you will receive SMS, and if you don't want to do that, you can use the authenticator. Third one is hardware device, the company which gives you a hardware device, and the sole task of that hardware device is generating the OTP codes. It keeps on generating OTP codes. Okay, it looks like a thermometer or a pen drive with a digital display. Okay, so now how will you enable mutual factor authentication for your M365 users? So if you go to this Microsoft 365 Admin Center and you click on active users, you have this multi-factor authentication. If you click on this multi-factor authentication, it will take you to the MFA admin page or the MFA console page or the portal where you can select the users, and you can, on the right side, you have the option to enable or disable the multi-factor authentication. You can do that for multiple users like bulk update. Okay, and all else you can select specific users and you can enable the multi-factor authentication. So let me open my console over here. So I go to my admin centers. Okay, I'm logged into admin portal, Microsoft 365 Admin Center, not the Exchange Admin Center. We go to active users.
And here I have this multi-factor authentication tab. So I click here. And you can see all my users are listed over here. So I can select any user and I will say enable. Okay. Or I can select multiple users, then to update multi-factor authentication status, select user who have the same status. So what it is telling is that I'm not able to update, enable MFA for all the users just because few users have enabled. Example, this Asif user is already enabled. Okay, so I will have to only select the disabled users. Okay, so when I check this, you will see that I can't enable multi-factor authentications. Okay, so either you have to select all disabled one or either you have to select all the enable. If I uncheck this, then you can enable multi-factor authentication for all the users in a single click. Okay, so I'm not going to do that. I will use only one user as of now, and I will say enable multi-factor authentication. Okay. So about enable multi-factor authentication, it will give us a small warning that please read the deployment guide. Okay, if you haven't read it. So it is nothing but it will ask like means there will be a call, SMS, or the authenticator app the user has to download or provide the authorized hard tokens. So it is all kind of stuffs mentioned in this MFA setup. So if I enable multi-factor authentication, it you can see it has been updated successfully. Okay, so just to disable when you have to disable. Now there is an option called as enforce. Enforce means I am going to enforce the user that he is bound or liable to use the multi-factor authentication. He has no other option to escape. You will, he means the user Adil will have to use the MFA. After so, after multi-factor authentication, enforce user will need to create app password to use non-browser applications such as Outlook or Link. For security reason, app passwords are not available to admins who will be able to sign in only with the browser. Okay, so what they are telling is after multi-factor, the user will create an app password to use non-browser applications such as Outlook or Link. Okay, so non-browser application like desktop application or Link will use that MFA. Okay, and for security reason, app passwords are not available to admins. Okay, so admin cannot use this enforced multi-factor authentication. Okay, we'll be able to sign in only with the browser. So we have to use only the browser for this setting if you are enabling. So I'm not going to enable that. Okay. So this is how multi-factor authentication works. Okay. So if I click on view, so this will give sign in allowed users or only for global administrator or only for password. So I will sign in allowed user. So I will select all the users who can sign in. Okay. So multi-factor authentication enabled. If I select enable, it will give you only the list of the enabled users. And if you want to get the list of user, okay, uh, all these users, then you can click on any and you will get the list of all the users. Okay. Now coming back to our next agenda, give me a minute.
So you are not using the license for no. Sorry, guys. Really means I was speaking on mute. I kept on mute for some reason and I forgot to unmute. Am I audible now? Yes, sir. Okay. So, so I was speaking about these licenses. So one of the activity which as a proactive monitoring that need to be done as an Office 365 administrator is that you have to monitor the license on daily basis or at least twice or thrice in a week where you have to come to this page and see what are the available licenses. Are you running out of licenses or not? Okay. And also you have to see what are the assigned licenses. So if you see, I have 25 licenses and I have assigned 19 licenses. So first thing is you have to know, see how many licenses are pending or I'm going to means is my license going to exhaust because there are license going to be assigned to the new users. And next thing is I will see that if I have assigned 19 users, so these 19 users really need license. Okay, so that is part of your administrative activity. You have to identify these 19 users and you have to really check that whether these 19 users are really active. It can be like a few users has left the organization, but you forgot to remove the licenses. Okay? So check assign licenses and check the available licenses. And if you're going to run off the out of the available licenses, you inform your finance or the procurement team and you tell them that we want more licenses for this Office 365 to function properly or the user to use the Office 365. Okay, so that is one of the activity as an Office 365 administrator. Okay, so now I have only E5 license. I can have E3 license, E1 license, F1, F3, and multiple licenses in this license page based on the purchase I have done. Since I have purchased only E5 license, I am able to see only E5 license. So what I meant to say is that you can have collection of multiple licenses for your organization. So it is not like if your organization has purchased E5, then you can't purchase E3. You can have collection of licenses. You can assign E3 to some users, you can assign E1 to some users, you can assign E5 and so on. Okay, so there is a mixture of license that can be assigned to your users based on their requirement. Okay, so for some reason, some user don't want every feature of my M365, you can go for E1. And if you want to give all the features, advanced features, then you can go for E5. So basically, you can have collections of licenses. Okay. Next thing is, I want to show you something.
So if you see, these are the various licenses. Okay, E3, E5, then you have E1, E3, Microsoft 365 licenses. Then you have the Office application, MS Office E3, E5 license. You have license for Windows 11. You have again, this is same thing, Microsoft 365 license. Okay, so you say E3, E5, E5 with security, E5 with compliance. So these are various types of licenses. And this is the comparison. Means if you are purchasing E3, then what all things you are going to get free. Okay, so if I am purchasing G3, then these are the application that is free for me. Okay, Visio for that. Okay, then I will get if I go to a threat protection, then I am going to get antivirus features as well. Okay, so these are the comparison. I will share with you this file. Okay, you can see the comparison. What is there in E3 and what is there not there in E5. Okay, and specifically means you can also see that what is there in E1, but what is there in E3, but not available in E1. Okay. Similarly, you have F1, F3 licenses. So these are the various comparison that I had. I was able to download from the Microsoft website. Okay, so this is a quick handy one. So in case your boss asks you that I want the comparison between the licenses and I want to, or specifically you can say that I want machine learning retention. So just get me the detail of the licenses. So you have to tell him that it is only supported in E5 and you can say it is supported in all the E3 and F5 licenses. Okay, so you tell them that E3 for E3 this machine learning is not supported. So based on the requirement of the business, you have to compare your products from here. Okay, so this is some handy. This keeps on updating. And if you go to M365 license comparison in Google or Microsoft website, then you will be able to download. So this is the latest one where you can compare all the licenses. So generally E1, E3 and E5 are used in corporate and we after that the mostly used license are F1, F3, F5. Okay. So that is hardly used, but E1, E3 and E5 are used for corporate and businesses. F1, F3, they are mostly used by government organization or frontline workers, okay, and or the doctors and all those kind of stuff. Okay, so back to our next agenda, license comparison. This document I will share with you, and then probably this could I will spend some time with you on this. So Exchange PowerShell. I go here. So at a time, it is very important for you people to not always use the graphical interface. Okay, हमेशा graphical में ही काम नहीं करना है. कुछ काम to ease your life, you have to use Exchange PowerShell. Exchange PowerShell या तो PowerShell generally people डरते हैं कि this is command line tool and this is difficult and we want some extra knowledge. No, it is not like that. You should have a basic concept about how to search and when to use PowerShell. Not for everything I will use my M365 portal. Okay, something I can do via PowerShell instead of going to my portal and randomly clicking on multiple pages and getting my job done. I can do a task in PowerShell very easily. I will show you the example.
But if you want to connect to Exchange PowerShell, and if you open this PowerShell window, you won't be able to run any command. Okay, so let me show you. So how to open PowerShell? Go to Start. So I will click Window PowerShell. And if I try to open any command of Exchange online, so the one of the command is get iPhone mailbox. Okay, so you are bound to get this error. So what it is telling is the term get mailbox is not recognized. PowerShell is telling me कि भाई तूने ये कमांड टाइप किया है लेकिन मैं नहीं पहचानता ये कमांड को. ठीक है, मुझे नहीं मालूम ये कमांड क्या है. एंड इफ आई टाइप एनी अदर कमांड, देखो गेट आइफन सर्विस मैंने टाइप किया. गेट आइफन सर्विस मैंने टाइप किया तो मेरे को कमांड मिल जाती है. मतलब कितने जितने भी सर्विसेज है ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो सारे सर्विसेज मेरे को, सॉरी मेरे कंप्यूटर में जितने भी सर्विसेज है ये सारे सर्विस मेरे को मिल गए. लेकिन सवाल ये है कि मैं गेट आइफन मेल बॉक्स मार रहा हूँ, देन व्हाई आई एम नॉट एबल टू रन और गेट द आउटपुट. ओके. ओके, एक्सक्यूज मी. ओके, सो बोलने का मतलब है गेट आइफन मेल बॉक्स नहीं चलेगा पावर शेल में, जबकि ये गेट आइफन मेल बॉक्स पावर शेल का ही कमांड है. बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू access PowerShell or run this command inside the PowerShell. So what I will do is, सबसे पहले तो तुमको PowerShell ओपन करना है तो स्टार्ट में जाओ और PowerShell टाइप करो और हो जाएगा. सो जनरली PowerShell में काम करने के लिए मैं यूज करता हूँ विंडोज PowerShell IAC, दैट इज द इंटीग्रेटेड integrated something, I don't remember the full form. IAC. Okay, integrated shell something. Okay, so मैं यहाँ पर IAC मारूंगा. मैंने क्लिक ऑन स्टार्ट एंड क्लिक ऑन IAC. तो यहाँ पर मेरे को ये ओपन होता है विंडो PowerShell IAC. तो आई विल क्लिक इन दिस थिंग, राइट क्लिक एंड आई विल सिलेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. सो जब मैं ये ओपन करता हूँ तो ये मेरे को बहुत सारे कमांड देता है इसमें. ठीक है. So it is just a PowerShell version. Okay, it's just a PowerShell console, like the native PowerShell console. IAC is the PowerShell console where you can use this script pane and you can use this as separate output pane. Okay, यहाँ पर मैं get hyphen service लिखूंगा. So it will give me the suggestions. ठीक है. और यहाँ पर मैं दूसरा भी कमांड लिखूंगा get hyphen एग्जाम्पल के लिए ACL. ठीक है. तो मैं कमांड्स पूरे यहाँ पर स्टोर करके रखूंगा और मेरे को जब जब जो जो कमांड चाहिए आई विल सिंपली क्लिक हियर एंड आई विल क्लिक ये वाला. ओके. अगर मेरे को दूसरा कमांड है तो मेरे को बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं. यहाँ पर मैं कमांड एज अ टेक्स्ट में स्टोर कर लूंगा एंड देन आई विल क्लिक दिस वन. ओके, सो गेट आइफन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. ओके, लेकिन जब मैं रन करूंगा गेट आइफन मेल बॉक्स,
ये बोलता है कि द टर्म गेट मेल बॉक्स इज नॉट रिकग्नाइज एज ए नेम, ठीक है, सो इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू रन दिस मेल बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये पावरशेल ये कमांड को नहीं पहचानता है। तो वी हैव टू टेल पावरशेल दैट तेरे को ये कमांड को पहचानना है एंड आई विल गिव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, प्लीज अपडेट। ओके, तो उसके लिए मैंने अ, एक पावरशेल कनेक्ट करने के लिए ये कमांड है, ठीक है। सो सबसे पहले तुम्हारे को ये कमांड रन करना पड़ेगा, इंस्टॉल मॉड्यूल नेम एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट, ठीक है। ये रन करने के बाद ये सब मैं रन करके रखा हूँ। आई विल शेयर दिस पावरशेल स्क्रिप्ट और दिस कमांड, ओके, वन बाय वन, एंड हाउ टू रन इट। तो पहला ये रन करो, उसके बाद ये रन करो, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन इन, ठीक है, यस टू ऑल, ठीक है। इंस्टॉल मॉड्यूल आईफन नेम एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट, ये क्या कर रहा है, ये पावरशेल के अंदर एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट के कमांड्स को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो जो मेरे को एरर आ रहा था गेट आइफन मेल बॉक्स, क्योंकि वो मेल बॉक्स गेट आइफन मेल बॉक्स कमांड या तो गेट आइफन जो भी एक्सचेंज के रिलेटेड कमांड्स है, वो इंफॉर्मेशन ये पावरशेल के अंदर फीड करने के लिए मेरे को एक बार ये रन करना जरूरी है, इंस्टॉल मॉड्यूल एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट। ओके, सो इससे क्या होगा, ऑल योर एक्सचेंज ऑनलाइन related commands will be imported to your PowerShell. Okay, then this PowerShell will be able to recognize all the commands related to Exchange Online. Okay, और ये वही कमांड है, इंस्टॉल मॉड्यूल Exchange Online Management current user, so you can run from here. Okay, एक एक करके रन करो, फिर गेट ये जब रन होने के बाद उसके बाद अपने को देखना है कि इंस्टॉल हुआ क्या। तो ये मैं रन करूंगा, गेट इंस्टॉल मॉड्यूल एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट। ओके, सो ये बताएगा हाँ भाई एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट है, इंस्टॉल्ड है, उसका वर्जन है और वो यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। अगर ये मैं अभी मेरा दूसरा पावरशेल दूसरे मशीन में मैं जाके यहाँ पर वही कमांड देता हूँ, दिस, और ये मेरा दूसरा वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर जाके तो ये ढूंढ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि भाई नहीं, इस मशीन में ये एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आई विल स्टॉप दिस वर्चुअल मशीन और मैं अगर यहाँ जाता हूँ जहाँ पर मैंने पावरशेल इंस्टॉल करके रखा है, ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग ये गेट कमांड रन करना है। तो गेट कमांड क्या करता है, हमेशा कमांड्स जो है तुम्हारे ज़्यादातर होते हैं जो कमांड होते हैं, या तो गेट से चालू होते हैं, या तो सेट से चालू होगा, या तो न्यू से चालू होगा, या तो ऐड से चालू होगा, ठीक है। तो ये सारे कमांड है, गेट सेट न्यू ऐड, तो जनरली यही कमांड यूज होते हैं। तो दिस इज द मोस्ट टाइप ऑफ कमांड्स यू विल सी, ठीक है। गेट मतलब क्या है, इट विल ओनली गिव द इंफॉर्मेशन, दैट इज फॉर मेकिंग द मॉडिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। सो सेट कमांड बहुत सोच समझ कर यूज करना, ठीक है। गेट तो सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाले के देगा तुम्हारी, सेट क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। जैसा मेरे को मेल बॉक्स देखना है तो गेट करूंगा, अगर मेल बॉक्स का मेरे को नाम चेंज करना है या तो उसका परमिशन चेंज करना है तो मैं सेट कमांड यूज करूंगा। न्यू कमांड कभी यूज करूंगा जब मेरे को कुछ नया चीज बनाना है, और ऐड कभी यूज करूंगा जैसा मेरे को कोई परमिशन ऐड करना है, ठीक है, या कुछ स्पेसिफिक चीज ऐड करना है। तो मॉडिफिकेशन के लिए सेट और एडिशन के लिए ऐड,
कुछ नया बनाना है तो न्यू। ठीक है, सो दीज आर दी verbs, okay, that are used. So verb hyphen noun, कमांड ऐसे ही रहते हैं, verb hyphen noun। एग्जाम्पल के लिए get hyphen mailbox। ठीक है, get तुम्हारा verb हो गया और mailbox तुम्हारा noun हो गया। कमांड इस फॉर्मेट में रहता है हमेशा याद रखना। And the noun verb can be get, set, new or add। ठीक है, so let's go to this PowerShell। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट टूल। उसके बाद मेरे को ये करना पड़ेगा इंपोर्ट मॉड्यूल एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट। तो ये क्या करेगा, ये पूरे कमांड्स को इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, इट ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो मेरे को टाइम नहीं लगा, सो इट्स गोइंग टू इंपोर्ट ऑल द कमांड्स। उसके बाद जो कमांड है वो कनेक्ट आईफन एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट। तो ये मैं कमांड क्यों रन करूंगा कि जब अपन पोर्टल में लॉगिन करते तो यूजर नेम पासवर्ड देते हैं ना। ठीक है, सो दिस कमांड फॉर connecting to exchange online management to your admin account via your admin account। ऐसा नहीं कि कनेक्ट एफएन एक्सचेंज ऑनलाइन डाल दिया मैंने तो वहाँ एक्सचेंज ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग का है ना वहाँ पर M365 में। तो बाय स्पेसिफाइंग दिस आई एम टेलिंग टू टारगेट ओनली माई टेनेंट, ओनली द टेनेंट that is used by this particular suffix। ओके, तो ये कनेक्ट करेगा और यहाँ पर ये एक वार्निंग दिया है, लेकिन बट जनरली ये वार्निंग ऐसा नहीं देता है। ये तुम्हारे को देगा एक यूजर नेम पासवर्ड का विंडो देगा तुम्हारे को। ठीक है, जहाँ पर तुम्हारे को यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये जो यूजर नेम है यही यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल क्लीन दिस। अब इसमें मैं कमांड रन करता हूँ गेट आईफन मेल बॉक्स। ठीक है, मैंने गेट आईफन मेल बॉक्स रन किया एंड नाउ आई एम एबल टू गेट ऑल द इनपुट। तो यू कैन सी कि देखो जितने भी मेल बॉक्स है सारे चीज का इंफॉर्मेशन आ गया इधर। ठीक है, सो इट विल गिव द नेम, उसका एलियास क्या है, ये डेटाबेस हो बैकग्राउंड में, ये माइक्रोसॉफ्ट से मतलब नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग इन डेटाबेस। और यहाँ पर सेंड कोटा मतलब 50 GB का लिमिट है देखो सबको। ठीक है, तो किसी को 99 GB है, किसी को 50 GB है। सो बेस्ड ऑन दी whether it is a shared mailbox or it is a user mailbox। यूजर मेलबॉक्स है तो लाइसेंस है तो 99 GB मिल जाता है। ठीक है, शेयर्ड मेलबॉक्स है तो तुम्हारे को 49.5 GB मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे को यहाँ पर दिख जाएगा। सो व्हाट इज द कमांड गेट आईफन मेल बॉक्स। ठीक है, और इसमें तुम अगर चाहो तो यू कैन यूज, देखो सिर्फ एक नाम ढूंढना है, सारे मेल बॉक्स नहीं ढूंढना है। तो यहाँ पर नेम का पैरामीटर मैं लूँगा। लेट मी सी। हाँ, सो गेट आईफन मेल बॉक्स आईफन आइडेंटिटी and I will say AC। So it will give all the information of the name with ACP। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ लेता हूँ और शमीम, सो यहाँ पर देखो शमीम का जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे को मिल गया। ठीक है, सो यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हो, सारे यूजर्स का इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुम एक पाइप लगा दो इसके आगे और आपको सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल के लिए
सिलेक्ट दे दूंगा मैं। सिलेक्ट, मेरे को अगर कोई भी प्रॉपर्टीज मालूम नहीं है तो मैं उसका कुछ भी स्टार्टिंग का कुछ याद रखूंगा आपके साथ, पी आर उसमें, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट डाल दूंगा। लेट मी सी व्हाट इट्स गिव आउटपुट। तो मैंने गेट आइफन मेल बॉक्स, आइफन आइडेंटिटी टू शमीम, इनका मैंने प्रॉपर्टीज मैंने सिलेक्ट पीआरओ, तो पीआरओ से जो भी उनका प्रॉपर्टीज है सब मेरे को दिखना चालू हो जाएगा। जैसा उनका प्रोहिबिट सेंड कोटा क्या है, प्रोहिबिट सेंड रिसीव कोटा क्या है, प्रोटोकॉल सेटिंग्स क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन है, अभी मैं गेट आइफन मेल बॉक्स दे रहा हूँ, तो इट इज नॉट लाइक इट हैज ओनली नेम्स, सॉरी, it has only names, alias, database, prohibit send quota और external और directory object ID। इतना ही नहीं है, यहाँ पर और भी चीजें हैं, ठीक है। सो ओनली दी चार पांच प्रॉपर्टीज आपको दिखता है। सो इफ यू वांट टू गेट मोर थिंग, तो यहाँ पर अगर मैं डालूंगा गेट आइफन मेल बॉक्स प्रॉपर्टी आइफन आइडेंटिटी और आइफन आइफन GM। सो लेट मी चेक कि क्या है। तो GM क्या है? गेट मेंबर्स। तो एक कमांड के साथ मैं क्या क्या देख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक यूजर्स का नाम है, इतने सारे प्रॉपर्टीज देख सकता हूँ। गेट आइफन मेल बॉक्स, आइफन आइडेंटिटी, आइफन यूजर नेम स्लैश GM। तो मेरे को अभी समझो, मेरे को देखना है व्हेन क्रिएटेड। चलो ये देखना है मेरे को, व्हेन क्रिएटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँ, क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट व्हेन क्रिएटेड, ठीक है। So you can get the information that the mailbox for this particular users was created, this user was created on this date and on this time, ठीक है। सो ये सब तुम्हारे को पावर शेल में खेलने आना चाहिए। सो ये सब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को ये सब ऐसे ही मिल जाएगा, तो यू कैन गूगल। ओके, यू डोंट रिमेम्बर, सो यू हैव टू जस्ट पुल द गूगल से, ओके गूगल ps command to get mailbox creation date in M365, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे तुम्हारे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कोड है, लेकिन फिर सिमिलरली अगर तुम्हारे को पिछले टॉपिक, तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट में या तो दूसरे भी कोई भी उस पार्टनर्स के वेबसाइट में, तो यहाँ पर सब कमांड्स तुम्हारे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इफ यू सी गेट मेल बॉक्स, हाइफन मेल बॉक्स, हाइफन आइडेंटिटी, हाइफन यूजर नेम, सिलेक्ट व्हेन क्रिएटेड, सो यही कमांड मैंने मारा था, ठीक है। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू गेट द कमांड, यू कैन ऑलवेज गूगल, ठीक है। पावरशेल कमांड सबको सब याद नहीं रहता है, लेकिन बट कैसे कमांड्स को ढूंढना है और कैसे एक यूजर्स का प्रॉपर्टीज तुम्हारे को देखना है। तो एक यूजर के साथ ना इतने प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और अपने को जब पहले अपन ने रन किए थे तो क्या क्या दिया था, सिर्फ नाम, एलियास, डेटाबेस और इतना इंफॉर्मेशन दिया था।
अपने को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमांड क्या है, वो जो कमांड है वो डालकर पाइपलाइन जीएम डालो, तो जीएम डालोगे तो सारे प्रॉपर्टीज उसमें लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज you can select for and you can search for specific properties। तो ये कैसा कभी काम आता है, कभी कोई बोलता है एडमिन कि आई वांट द क्रिएशन डेट फॉर ऑल द यूजर्स, तो वो टाइम में तुम्हारे को ऐसा ये पावरशेल कमांड काम आएगा। यू हैव टू से गेट आइफन मेल बॉक्स आइफन आइडेंटिटी, और ये यहाँ पर जो यूजर है यहाँ पर ऑल यूजर्स के लिए एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट का पाथ यहाँ दे दो और वहां पर सिलेक्ट व्हेन क्रिएटेड कर दो, तो पूरे यूजर्स का जितना भी क्रिएशन डेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को समझो इनका मेरे को कुछ व्हेन क्रिएटेड का मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, WHEN एग्जैक्ट मेरे को बॉडिंग नहीं मालूम है, तो आई विल सिलेक्ट व्हेन एंड आई विल पुट दिस एस्ट्रिसिक साइन ओवर, और मैं यहाँ पर रन कर दूँ। तो व्हेन से जो जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज है सब मेरे को यहाँ पर दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, व्हेन मेल बॉक्स व्हेन सॉफ्टवेयर व्हेन चेंज, तो कभी चेंज हुआ। ठीक है, सो ये उसी दिन 9:22 में चेंज हुआ। ठीक है, क्रिएशन और UTC टाइमिंग भी तुम्हारे को इसमें दे दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट टू एक्सचेंज पावर शेल। ओके, और इसका स्टेप्स क्या है, ये पहला कमांड रन करूँ, उसके बाद इंस्टॉल मॉड्यूल, एक्सचेंज का जो मॉड्यूल है वो ये करो, ये कमांड में शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। उसके बाद वो इंस्टॉल हुआ क्या सक्सेसफुली वो देखने के लिए ये कमांड है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट करो, इंपोर्ट मॉड्यूल एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट, एंड देन रन द कमांड कनेक्ट एक्सचेंज ऑनलाइन यूजर प्रिंसिपल नेम, और यहाँ पर तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड सॉरी यूजर नेम यहाँ पर स्पेसिफाई करो, जो तुम्हारा ऑनलाइन बैच का मैंने यूजर नेम दिया है ना वो यहाँ पर स्पेसिफाई करो। तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू M365 ऑथेंटिकेशन पेज, जहाँ पर तुमको यूजर नेम पासवर्ड वापस से डालना पड़ेगा, और फिर यू कैन एबल टू यूज ऑल द एक्सचेंज रिलेटेड कमांड। सो दिस इज वन ऑफ द कमांड। ओके, मेरे पास दूसरा भी एक कमांड है, आई विल शो यू अ बेटर एग्जांपल कि तुम क्या कर सकते हो यूजिंग दिस PowerShell एंड व्हाई PowerShell इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और मैं एक्सचेंज का मैनेजमेंट के लिए ना मैं पोर्टल में नहीं जाता हूँ, मैं पूरे काम मेरे सारे काम मैं यहीं से करता हूँ, क्योंकि मेरे को बस यहाँ पर नाम चेंज करना है, कमांड्स रेडी है, एक बार मेरे को कमांड सर्च I have to search for the command only once. I will make the list of commands, and then I have to only change the usernames or the properties. Okay, so I don't want to go to the portal pages every time and look for the specific users and pull out their information. Okay, so this is very friendly. Once you know how to play with PowerShell, you will have a good idea, and your administrative day-to-day activities and your life will become more easy. So let me show you one better example. Okay, so if I ओके, सो तुम्हारे को एक टास्क आया है जहां पर तुम्हारे को एक यूजर्स को फुल परमिशन देना है मेल बॉक्स पे, तो वो टाइम में आप क्या करोगे? सो लेट मी गो हियर। Let me pull out the Google, and I want to determine PowerShell command to assign mailbox permission। ठीक है,
यू हैव बीन असाइन्ड अ टास्क, तुम्हारे को रोज का काम आता है कि मेल बॉक्स में परमिशन देना है। तो क्या करोगे, तुम यहाँ जाओगे एक्सचेंज एडमिन सेंटर में, यूजर्स में क्लिक करोगे, या तो सॉरी यहाँ पर यूजर्स में क्लिक करोगे, यहाँ पर डेलीगेशन में जाओगे, और यहाँ पर तुम कौन सा परमिशन चाहिए, फुल एक्सेस है तो एडिट में क्लिक करोगे। यू विल गो टू ऐड मेंबर्स, यू विल सर्च फॉर द मेंबर्स, ठीक है। यू विल से सेव, देन यू विल से कंफर्म, ठीक है। तो इतने सारे क्लिक्स नहीं करना है मेरे को खाली एक बार कमांड ढूंढना है। तो मैं जाऊंगा और ये कमांड यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला यूज करता हूँ मैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कमांड। देखो ये तो है न्यू मेल बॉक्स क्रिएट करने का, लेकिन परमिशन देने का कमांड देखो यहाँ पर। तो इस कॉपी कर लूंगा, एक बार खाली तुम्हारे को एक कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं मेरा जो मेल्स के जो रेपोजिटरी है जहाँ पर मैं नोट करके रखूंगा, यहाँ पर मेरे को एक बार ये करना है, ऐड मेल बॉक्स परमिशन आईफन शेयर्ड मेल बॉक्स। तो कौन सा है शेयर्ड मेल बॉक्स? अब किसी यूजर ने बोला कि भाई मेरे को ये शेयर्ड मेल बॉक्स में एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है तो यह सॉरी, ठीक है। अब ये क्रिकेट नाम का है शेयर्ड मेल बॉक्स, तो ये इसका आईडी है। तो मेरे को यूजर खाली बोलता देगा कि मेरे को ये कमिटी जो है उसका शेयर्ड मेल बॉक्स में मेरे को परमिशन चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो शेयर्ड मेल बॉक्स है ना, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड आईफन यूजर मेल रेसिपिएंट एक्सेस राइट फुल एक्सेस। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा मेरा आईडी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये शेयर्ड मेल बॉक्स में मुस्तफ़ा को फुल एक्सेस दे रहा हूँ, हाइफन इनहेरिटेंस टाइप और ये कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कमांड रन हो रहा है, और यहाँ पर क्या वो बता रहा है कि वो जो शेयर्ड मेल बॉक्स है उसका नाम है क्रिकेट और फुल एक्सेस दे दिया गया है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर मैं क्यों इतना बड़ा कमांड मैं क्यों याद रखूं? तो तुमको याद नहीं रखना है, तुमको सिर्फ एक बार ये कमांड कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद जैसा जैसा रिक्वेस्ट आएगा सिर्फ तुम्हारे को ये चीज चेंज करना है और ये चीज चेंज करना है, ठीक है। कल के दिन यूजर ने आया और बोला, कोई यूजर ने कि भाई आई वांट एग्जाम्पल बरकत, ओके, आई वांट एक्स बरकत आके बोलता है कि मेरे को एक्सेस चाहिए कस्टमर केयर के मेल बॉक्स में, ठीक है। तो ठीक है, तो उसका मैं बोलूँगा कौन से ईमेल आईडी कौन सा है, तो वो यूज़र तुम्हारे को ईमेल आईडी देगा। सो ये ईमेल आईडी सिर्फ कॉपी करो, ठीक है। और वो यूज़र से पूछना पड़ता तेरा यूज़र आईडी क्या है, तो उसका जो रिक्वेस्ट में ही यूज़र आईडी देगा, बट स्टिल आई विल देखता हूँ यहाँ पर यूज़र आईडी क्या है उसका। यहाँ पर ये बरकत वन है यूज़र आईडी इसका, ठीक है। तो समझ में आई बात? मेरे को बार बार कंसोल में नहीं जाना है, मेरे को खाली शेयर्ड मेल बॉक्स का नाम और यूजर का नाम ये चेंज करना है। जब भी एक्सेस रिलेटेड रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ जाके सिर्फ रन कर देना है, ठीक है। तो मेरे को मल्टीपल क्लिक्स के काम नहीं आएंगे, ठीक है। यूजर का जो शेयर्ड मेल बॉक्स है वो यूजर वो नाम दे देगा और यूजर का नाम भी दे देगा, सिर्फ तुम्हारे को कॉपी पेस्ट करना है। एंड दिस यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे को सेंड एज परमिशन के लिए सेम ही राइट्स है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस राइट्स की जगह में तुम्हारा वो जो सेंड एज है वो राइट्स आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही सेंड ऑन बिहाफ का, तो उसके थोड़ा जो पैरामीटर्स है थोड़े अलग है, लेकिन दिस इज हाउ यू सर्च फॉर एनी कमांड एंड दिस इज हाउ यू विल यूज,
Okay, so it makes your life easy. Okay, you don't want to go to portal every now and then, and you don't want to do multiple clicks. Okay, so that is the whole agenda of using PowerShell. And PowerShell scripts के लिए भी यूज होता है. मैं एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना के बताऊंगा तुम लोग को. सो यू लेटर ऑन यू कैन यूज पावर शेल फॉर स्क्रिप्टिंग, लाइक मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल मेल बॉक्स में परमिशन देना है, तो आई एक स्क्रिप्ट बना के रख दूंगा, एंड आई कैन असाइन परमिशन टू वर्क ऑन 100 ऑफ द मेल बॉक्सेस इन अ सिंगल क्लिक. ठीक है, ऑटोमेशन के लिए भी ये पावर शेल काम आता है. सो you can unmute yourself, and if you people have any questions, just let me know. Or you can always post in the chat box. डीएलपी और सिक्योरिटी और कंप्लायंस ये अगला चैप्टर है. ठीक है, तो अगले चैप्टर में अपन ये लिटिगेशन होल्ड और रिटेंशन ये सब देखेंगे. और probably for Office 365 next session should be the conclusion session. Okay, it should conclude. और उसके बाद अपन एज्योर चालू कर देंगे. So anyone has any questions? I will give you 1 more minute to think if you have any questions related to the topics covered so far. This MFA license comparison and this PowerShell. So if not, then I will assume that no one has any questions, and we are good to wind up this call. I hope the session was informative, and I will share the recording soon. Okay, keep your lab ready, and the lab will be the lab fix for coming session. Yeah, Riaz, you have any questions? So can you give me 5 minutes? Can you help me with this installation of Azure AD Connect? So can you share your screen? Yeah. So are you able to see my screen? Yes, I can. Yeah, 1 second. Yeah, so so shall I connect or use express setting or click on customers? Use expert setting. Let's see. Okay. Yeah, okay. So here you have to specify that the username password which I gave. Yeah. What it will do, it will go to Office 365 and try to connect your on-premises Active Directory with Azure Active Directory. Okay. So where were you getting error? In which page were you getting No, error? no, actually I didn't get any error. I don't know how to install. That's why. So enter the activity domain service enterprise administrator credentials. Yeah. Yeah.
Shall I click on next? Okay, so continue without matching all UPN suffix to verified domains. So Mm, what it is telling is FinCity is not added. ये क्यों आ रहा है? Because you are using 76 hpc3 dot SPG. on my on Microsoft.com, but Yes. your domain here is fincity.com. Mm, Okay, so there is a mismatch. okay. So go open Active Directory user and computer. Okay. Open any users. Yeah. Yes, sir. Go to account, Mm, and in this FinCity, if you see, yeah, drop down it. You have only FinCity. So you should have at 76 hpc3.com dot on Microsoft.com here. Okay. okay. So you have to add that domain in your on-premises Active Directory, that domain suffix, rather I can say. So for that, you have to go to Server Manager, close this, Okay, sir. go to Server Manager, Tools, Active Directory, Domain and Trusts, Mm, Domains and Trust. okay. In that, you have to right click on that, the topmost activity domain and trust, Yes. properties. Properties. Yes. So here I. Here, here you specify the domain of your Azure ID, 76 hpc3 dot on Microsoft.com. अगर ये डोमेन से तुम फॉरेस्ट बनाते तो ये इशू नहीं होता था. Oh, But since you have made a fincity.com, but still you can add this as a suffix, add. add. Yeah. Hmm. I hope the spelling is correct. Okay. 76 HPC 3 dot on Dot. Microsoft.com. Yes. Now click apply. Okay. Okay, sir. Now you go to Active Directory user and computer, Mm, and now you open the user. Now you click on account, okay. and now in the drop down you can see 76 HP33 is there. Okay, Yes, leave sir. it. Mm, Cancel it. So it should reflect here. So this domain is now available in your local Active Directory. Correct. Okay. okay. So Mm, Azure AD will look for the matching name. yeah. So go to this thing and go to previous, Okay. and now click next. Yes. Okay, so you have that thing. Okay, so continue with the magic to a verified domain. Click on that. Let's see. Uh, Click on that refresh button in the yeah, Oh, still the same. Not added. will be changed from okay, not an issue. You click on that continue which without matching all you can suffix. Okay, sir. Actually, this should not happen if Mm, you close everything and rerun the installation. yeah. Yes, sir. Yes. Okay, so now rerun. So guys, just see how he's installing. Next. Repair. Okay, okay. Cancel it, cancel it. Yeah. You have already installed it. Cancel it. No, sir. I didn't install it. Okay, click finish. Now go to start Mm, and see if you have that as your AD Connect folder. yeah. Here's the folder.
Yeah, drop down and use this Azure Ready Connect. Okay, so it will start the configuration from after installation. So you click on that use Express settings. Now specify the name. 1 second, sir. Keep it in a text file. Hmm. Bit slow you. So it is verifying for all the domains. Okay, so now you put that your username, PinCity username and password. Yeah, okay, sir. Are you using the proper slash? I don't think you are using the. No, no, sorry, sorry. Same. Okay, just check with this continue. Yeah. Now click next. Let's see what happens. Once you click, we will do the following installation. Start the single and configuration. Okay, you go to previous. Click on previous. Yeah, okay, sir. Go to previous. Mm, We will use the customized settings. Go to previous. Customize. mm. Uh, Now specify a customer use an existing specify a customer installation location. Use the first option. Okay, click install. After that, you have to supply that username and password again. 76HP3. Yeah, yes. Yeah, okay. And then after that, you will have to provide the local admin password, local AD Okay. onto me. So it is creating a SQL database in this location. Mm. Other. Yeah.
Why it is taking so much time? I don't know, sir. Okay, you do one thing. After that, you provide this thing, then provide uh, this AD username and password. It will automatically verify the domain. Yeah. Okay. Okay. Mm. User sign in. Pass hash synchronization, correct? Yes. Yes. Click on next. Okay. Okay. Now specify the password. You correct to the directory. Mm. Add Okay. directories. Yes. Now use an existing AD account. Yeah. Or okay, mention this enterprise admin username. Okay. Administrator. Yeah, you were correct. FinCity administrator. Yeah. Okay. FinCity.com. Okay, so now it is configured. Now Mm. click next. Okay, Yeah. Okay, sir. that is done. Now it will ask for the which OU to be synchronized. User principal name, just drop down. Select the on-premise attribute to use as the Azure AD username. ठीक है, user principal, leave it, user principal. Yeah. Okay, now continue without all matching all VPN service. Click next. Yeah. Okay. I want that domain to be verified. Now don't sync selected domains on OU. Six. Yes. Now expand that. Now remove the check mark from the top. Mm. Now you select which OU you need to synchronize. Now click next. Okay, next. Okay. Next, click next. Yes. Click next. And what all users were there in start the synchronize? Okay, install. Okay. Now in open Azure Active, your normal Active Directory. Yeah. Mm. Now, what all users are there in IT? IT Uh, 120 admin. Okay. So this should synchronize to your 76 HPC3. Now, go to Azure AD Connect. Yeah. So once this configuration is complete, you should be able to see the users in this M365 portal. Okay. Okay. Mm. So that's it. Means how will you? So you have to have the DNS suffix. It doesn't matter whatever Active Directory you have installed. It can be tata.com, reliance.com, but your DNS suffix or your domain suffix should match what is there in M365. Okay, sir. And if you go to services.msc,
and you after installing, you will see where is the console services.ins. So you will see that Active Directory AD service. Can you see that? Active Directory domain service and web service. Okay, so once it get installed, you will get that Active Directory synchronization service. AD Okay. sync health monitor and health insight. Two services might be there. So Mhm. that two service will be used by Azure AD Connect to synchronize all the users. Okay. 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 So let it cook, and if there's anything, just connect with me offline. It's Yeah. taking more time. Okay. Yeah. Sure. Okay. Okay. Bye everyone. I hope the Bye. session was informative. Slowly.